गुड इवनिंग, हाउ यू डूइंग। हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, नो, पीरियोडिक टेबल की। सो हैव यू सॉल्व सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? अगर नहीं है तो प्लीज कर लो यार, हम लोग कुछ करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर एज मेनी गुड क्वेश्चन एज पॉसिबल, बट आपका काम क्या है, डिटेल में करिए। एंड यू वोंट बिलीव इट, व्हेन आई वाज डूइंग दिस चैप्टर आई रियलाइज इसमें से डायरेक्टली सेम चीज जेई मेन में आई, लाइक वर्ड टू वर्ड। बस एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दे मेड इट एमसीक्यू। आई विल शो यू व्हिच वन एज वेल, इट्स देयर इन दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो किसके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है? अगर आप 12th स्टैंडर्ड में है, आपको 11th रिवाइज करना है, आपके लिए। अगर आप 11th खत्म कर चुके हैं, यूजफुल फॉर यू। इनफैक्ट ये वाला तो 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी चल जाएगा। एंड वेदर यू डूइंग जेई और नीट, दिस सेशन इज रेलेवेंट टू यू। आई नो, मैं नीट चैनल पे लाइव जा रहा हूँ। नीट चैनल नहीं है ना? हाँ, नीट चैनल ही है ये वाला तो, राइट। जेई के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, विल बेनिफिट देम फॉर श्योर, लाइक अ 100%। देखो, सिलेबस जेई और नीट का एग्जैक्टली सेम है। जो एनएमसी अपडेट आया था, रिमेंबर वी डिड दैट सेशन, उसमें सिलेबस था सेम सिलेबस, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके जेई में डाला। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल कि जैसा जेई का पेपर आए, पेपर भी वैसा ही आए। लेट्स सी, लेट्स सी। खैर, पेपर वेपर देखा जाएगा, पहले हम लोग करते हैं कुछ ऑसम क्वेश्चंस, राइट, फ्रॉम दिस ऑसम टॉपिक। आवाज आ रही है तीर्थराज? ओके, गुड, ऑलराइट ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। शैल वी स्टार्ट? पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, जस्ट ऑल टैबिंग टू गेट टू द राइट वन। ओके, कूल। गुड इवनिंग राधिका, पंपा, वेलकम वेलकम वेलकम। सो या, पहला वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक, oops, no, 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 I showed you the answer. Pencil like नहीं In terms of periodic group, where would you locate the element with z equal to 114? z 114 कहां पे आएगा? Of course, Rudraksh, how are you doing? Long time. Where will z equal to 114 be? Hey, Vaishnavi, long time, long time. z equal to 114. So how do you solve a question like this? आपको देखना है कि नियरेस्ट नोबल गैस कहां आती है, फिर उससे हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट आई सजेस्ट। सो नोबल गैसेस के नंबर्स, इट विल बी गुड टू रिमेंबर। आई नो यार, आई हेट रिमेंबरिंग रैंडम थिंग्स, बट नोबल गैसेस यू शुड रिमेंबर 1 to 20 एलिमेंट्स, उसके बाद नोबल गैसेस, दैट्स मोर देन एनफ। यू डोंट हैव टू मग ऑल दोस अदर, ये कहां था वो कहां था, वो सब करने की जरूरत नहीं है। बट नोबल गैसेस यू मस्ट नो। व्हाट आर द नोबल गैसेस? You have noble gas at 2, helium, फिर 10 which is neon, then argon। argon के बाद क्या होता है? krypton, xenon, जो भी होता है, but these are the numbers: 2, 10, 18, 36, 54, 86 and then 118. Now this last one here, this one's interesting. Like last वाला 118, ये 14. So all I've got to do is 18 से 4 घटाओ 118, एंड इंटरेस्टिंग, ये 18th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप हो जाएगा, है ना? 114 विल बी द 14th ग्रुप। 14th ग्रुप मतलब कि जो कॉलम है उसको ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड कौन सा होगा? हाँ, हो गया 14th ग्रुप। पीरियड कौन सा होगा? बताओ बताओ। हिमानी, गुड इवनिंग, यू हैव अ क्वेरी? आई आल्सो हैव अ क्वेरी, आई एम आस्किंग यू गाइस क्वेश्चन, सो आई एम गुड। इसका आंसर क्या होगा गाइस? कम ऑन, वेयर आर यू? इतना धीरे? कम ऑन, यू गाइस आर मच फास्टर देन दिस। अगर 14th ग्रुप अगर फिगर आउट कर लिया, पीरियड कैसे फिगर आउट करेंगे? जस्ट काउंट दिस ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। या, सिंस इसी में से 4 कम है, 118, 17, 16, 15, 14, दिस गाय राइट हियर, दैट मींस 7th पीरियड and 14th group. That's the answer to this question. Easy question to start off with, right? Easy question to start off with. अगला सवाल देखते हैं। In terms of, ये इसका तो कर देना, 7 period and 14th group. We figured this one out. Let's look at the next question. This was question number 5 from subjective question. Let's look at question number 11 next. What do you understand by isoelectronic species? Name a species that will be isoelectronic with each of these atoms. So this is interesting. Yeah, usually you expect एक MCQ, but NCERT subjective करने का ही point है to broaden your horizon, ताकि और नई चीजें हम लोग ट्राई करें। Now in these नई चीजें you can pick any of them. फ्लोराइड आयन के साथ कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है? आर्गन के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक? एनी, सो यू कैन गिव मी एनी आंसर, राइट? आंसर बाय तीसरा जो डिफरेंट बाय पंपा, डिफरेंट बाय राधिका, सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। मैग्नीशियम 2+, Rb+, व्हाट डू यू थिंक इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? दिस बताइए प्लीज। Similar electrons, absolutely no. Yeah, yeah. Himani, why don't you ping me on I Teach Chem and I'll give you stuff to read. Okay? Yeah, ping me here on Telegram or on Discord. I'll give you stuff to read. Okay? Ionic bond, metallic bond, etc. Sure. You can also just look it up on the BYJU'S website. That's the easiest thing to do, actually. That's even better. Oh, okay. 1 and 3 isoelectronic. Oh, that's interesting. Rogue, that's interesting. 1 and 3 are isoelectronic. Okay. ठीक है, तो 1 का एग्जाम्पल इज 3, 3 का एग्जाम्पल इज 1। चलो,
What about 2 and 4? Can you give me some more examples of 2 and 4? Okay, 1 is Na2 Na plus, 2 is S2 minus, 3 is Al3 plus, 4 कौन सा है पीयूष? चौर का बताओ. Good, good. 1 is isoelectronic with 3. That is also interesting. ठीक है. तो isoelectronic मतलब same number of electrons, different protons. Charge species हो सकते हैं. Usually noble gas configuration. अब noble gas configuration कौन सा है? इनका सबसे पास noble gas कौन सा होगा? Let's write it down. इसका 10, इसका 10, इसका 18, इसका 36. Rubidium, in fact, rubidium is 37. You take off one electron, you get 36 electrons, which then becomes this guy right here. Rb plus is this. Okay. तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा? कुछ एग्जाम्पल आ सकते हो. फ्लोराइड का कुछ भी हो सकता है, राइट? ऑक्सीजन हो सकता है, खुद मैग्नीशियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम आयन, सोडियम भी हो सकता है. आर्गॉन का क्या होगा? आर्गॉन का क्लोराइड आयन हो जाएगा. रुबीडियम का कौन सा होगा? रुबीडियम इज इंटरेस्टिंग. रुबीडियम का मुझे बाकी याद नहीं आ रहे हैं, चलो क्रिप्टॉन ही डाल देते हैं. क्रिप्टॉन कैन बी एन एग्जांपल फॉर दिस, राइट? 36 मतलब क्रिप्टॉन. ठीक है. ज़ेनॉन इज 54 एटसेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. ठीक है. और रेडॉन आई थिंक 86 पे आता है. कूल. इट्स ऑल राइट. Miss step of creativity. CL, yeah. Br minus 2 does not exist. Yes, Piyush, you are right. Br minus 2 does not exist. You are right. Krypton is 36. Yes, yes, exactly, Rogue. I've been watching a lot of Superman TV shows lately, so I was surprised. Pleasantly surprised. अरे हाँ यार, गैस भी होती है क्रिप्टॉन के नाम से. That's very interesting. So all right, भाग्या, welcome, welcome, welcome. We've just started. दूसरा सवाल है ये जो हमने अभी खत्म किया है. आज हम लोग रैपिड फायर मोड में, राइट? बिकॉज पीरियोडिक टेबल जल्दी जल्दी हो जाता है. मे बी सेशन भी जल्दी हो जाए, डिपेंड्स ऑन यू. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट व्हाइल डिफाइनिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हो क्या? ये आइसोलेटेड, आई विल एक्सप्लेन दिस वन. इफ यू वांट यू कैन टेल मी इन द चैट एज वेल. लेट मी, बट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस हियर बिकॉज़ दिस इज अ गुड आइडिया टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस. व्हाट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम? मतलब एक एटम इतना दूर है दूसरे एटम से कि उन दोनों के न्यूक्लियस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है. देखो, अगर पास में आ गए तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, रिपेल करेगा. दूसरी चीज, इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको इरिटेट करेंगे, दे विल कम क्लोजर. इसके इलेक्ट्रॉन, सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीस टू न्यूक्लियस. सो इफ दे आर फार अवे, देन किसी और न्यूक्लियस का उस पर नहीं होता है. कुछ काफी बार स्टूडेंट्स थियोरी में, बोर्ड्स में कहीं पे भी लिख देते हैं, अरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं यार, न्यूक्लियस इज द प्रॉब्लम, न्यूक्लियस इज द बिगर प्रॉब्लम. इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के भी होते हैं, एक एटम में खुद के इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, बट दूसरे का न्यूक्लियस अगर आ गया बॉस, दैट इज गोइंग टू डिस्टॉर्ट स्टफ. ओके, सो आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब बिल्कुल अकेला एटम. ठीक है. नो अट्रैक्शन रिपल्शन, मेनली फ्रॉम न्यूक्लियस. ओके, दैट्स द मेन आइडिया. एंड व्हाट अबाउट दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीस थिंग्स? ओके, अगर if you add an electron, that is electron gain enthalpy, also known as electron affinity. सेम ही चीज है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कि कितना ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन प्यारा है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज. या यू हैव मर्क्ड दीस वैल्यूज. -349 फॉर क्लोरीन, -328 फॉर फ्लोरीन. क्लोरीन एक्सेप्शन होता है, फ्लोरीन ज्यादा होता है, वो सब सवाल बाद में आएगा. व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया. एक एक करके निकालते हैं. आई नो you have O2 minus or you have Al3 plus. Let's not talk about minus, let's talk about only plus ones. Yeah, तो इसमें आप बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा है, कम है, जो भी है, बट यू डू इट वन बाय वन. एक साथ में दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते. एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा. इसलिए इन द टेबल्स ऑफ एनसीईआरटी, इन पी ब्लॉक एंड इन डी ब्लॉक एंड एवरीवेयर एल्स, यू विल सी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग है, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग है. ठीक है. दे आर डिफरेंट वैल्यूज एंड द होल गोल इज कि they're not affected by any other atoms, especially nuclei. ठीक है. Isolate gases की हम लोग बात कर ली. What about ground state? What about ground state? Any doubt? Let me look at the chat right now. Devanshi, super duper, good evening, good evening. Sara, good evening, hello, hello. Requirements of comparison, take out, okay, all right, super duper, Aditya, all right, cool. What is ground state? Ground state मतलब कि उस एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सब भाई साहब अपने जगह पे बैठे हैं. Ground state does not mean n equal to 1. ये दिस इज नॉट ग्राउंड स्टेट, है ना. आई हैव सीन स्टूडेंट्स से दिस. वाइवा होता है ना, आपका भी प्रैक्टिकल चला गया, बट कोई पूछता है ग्राउंड स्टेट क्या होता है. आई हैव टेकन इट यूज. ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1. क्यों भाई, क्यों n इक्वल टू 1? n इक्वल टू 1 ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. ठीक है. अब वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर में. व्हेन यू टॉक अबाउट पीरियोडिक टेबल, डज नॉट मीन दिस. ग्राउंड स्टेट डज नॉट मीन दिस. फॉर एग्जांपल, द ग्राउंड स्टेट इज 3d10 4s1. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम. ठीक है. ग्राउंड स्टेट इज मोर, मतलब इसके बारे में आप सोचते हो जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स बनाते हो, राइट? दैट इज व्हेन यू थिंक ऑफ ग्राउंड स्टेट, है ना. अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो,
that is when you think of ground state. These are the two broad ideas where you think and you need ground state. Where? For hybridization. That is where you say ground state, excited state. कार्बन का ग्राउंड स्टेट क्या है? 2s2 और 2p2 है ना. एक्साइटेड स्टेट क्या है? ये एक एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब चले गए. कार्बन सबसे सिंपल है इसलिए इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं. ये बॉन्डिंग में वी विल डू इन बॉन्डिंग, बट व्हाट इज वेयर इज द यूज ऑफ दिस? या ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट का यूज कहां पर होता है? देखो मैं एनसीईआरटी की चीजें कर रहा हूं, कुछ भारी भारी भरकम चीजें नहीं कर रहा हूं. तो अगर ये मुश्किल लग रहा है देन यू रियली हैव टू रीड द एनसीईआरटी. ठीक है, यू कैन आल्सो चेक आउट माय सेशंस इफ दिस इज वियर्ड टू यू. ये सब पहली बार सुन रहे हो, आई हैव डन मोस्ट ऑफ दीज आइडियाज केमिकल बॉन्डिंग के ऑन दिस. हाँ देखो पीयूष बोल डालने वाला था ना n=1. इट्स ओके. जल्दी जल्दी में हम लोग ये सब चीजें कर देते हैं, बट नीट में जल्दी तो आपको होती है. यू हैव 50 क्वेश्चंस, उसमें से 45 करना है, तुरंत करना है, 1 घंटे के अंदर करना है, सर पे बहुत पहाड़ है, तो जल्दी तो है. या आई एम नॉट गोइंग टू शुगरकोट इट, जल्दी है, बट उस जल्दी को ध्यान से भी करना जरूरी है ना. यू कांट जस्ट डू इट जल्दी से. ठीक है, ऑलराइट, कूल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखो दिस n = 1. ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.18 × 10⁻18 जूल. Calculate the ionization enthalpy of atomic hydrogen in terms of joule per mole. Beautiful question. Now this is what I like the most about NCERT. वो धीरे धीरे चीजें बिल्ड अप करता है. तो 3.15 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट दिया है, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर मोल क्या होगी. सोचो कैसे करोगे इसको. हाउ विल यू डू दिस? सोमनाथ, आई डिडंट फॉलो, मे बी आपकी हिंदी थोड़ी ज्यादा प्योर है, मैं समझ नहीं पाया. आकाश बायजूस का प्लेटफॉर्म. Okay, I didn't understand what you're saying. This is the Aakash BYJU'S platform. Yeah, I didn't understand. See, I didn't understand. Sorry. Ping me, I guess, on I Teach Chem if you want to talk on Telegram or on Discord. Yeah. Okay. Can you guys do this? Here's the first one where I've given you a small bit of a numerical to do. करके बताओ कैसे करोगे इसको. Please try this question out. Yeah. How do you start? अगर मैथ्स नहीं समझ में आ रही, नॉट अ प्रॉब्लम. कैन यू टेल मी द प्रोसेस? व्हाट आर यू थिंकिंग? थॉट्स क्या हैं व्हेन यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस? व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? व्हाट कम्स टू माइंड? इसको कैसे किया जाए? लेट्स फोकस ऑन दैट. ओके, पर -19. ओके ओके. Oh, you're saying they're good? I can't follow so much. I'm sorry. Maybe you can talk in English अगर हिंदी ठीक नहीं है तो that's okay. 21.76 10 power -19 -21.76. पीयूष मतलब 10 गुना हो गया? नहीं. आई Yeah, Piyush, that is the same as what I've written, na? You put in 10 power -19 minus 10 power -18 लिखा है, same ही तो हो गया. What is ionization enthalpy per mole? एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगा कितना एनर्जी, कितना एफर्ट लगा? -2.18 × 10 power -19 जूल. एक में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. अलग अलग एटम से. एक एटम थोड़ी निकालोगे, एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है. So I have a lot of electrons, I have a lot of atoms, I have a lot of atoms. कितने एटम्स हैं हमारे पास? I have Na atoms, right? I have 1 mole of atoms, and each atom से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? You remove Na electron. That's it. So you multiply Na times this. That gives you the answer. Thank you, Teethraj. Thank you, Teethraj. -5 होगा या 5? हाँ, 10 power 5 होगा. ठीक है. हाँ. मतलब सोचा जाए तो 1300 किलो जूल, अराउंड 1300 किलो जूल. यस तीर्थराज, इट वाज पर मोल. हाँ भाई, पढ़ लिया करो सवाल. जूल पर मोल हाईलाइट भी किया था मैंने. या सो 1.3 × 10⁻6 जूल और 1300 किलो जूल per mole approximately. Yeah, you guys can do the perfect calculation. 6.0221 times this number will give you the actual this thing. Yeah, 1.3 × 10⁻6 approximately. Exactly, Swati. Good to see you here. Yeah, all right. Let's go to the next question. Good work. Good evening, Tanu. How are you doing? Among the second period elements, देखो शुरू होगा exceptions. Among the second period elements, the actual ionization enthalpies are in the order lithium, then boron, then beryllium, then carbon, then oxygen, then nitrogen, fluorine, and then neon. Explain why beryllium is higher than B. Also explain why O is lower than N and F. इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, originally, what does the second period look like? Second period looks like this: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. But look at this. यहाँ है anomaly. Where are your anomalies? What is an anomaly? Anomaly मतलब वही exception, right? Ionization enthalpy का definition मतलब
एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यू गिव एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो नियॉन रिक्वायर्स द मोस्ट एनर्जी, ऑब्वियसली इट्स क्या बोलते हैं इसको, नोबल गैस है, नोबल गैस को तो भाई कुछ नहीं करना है, इसको नोबल रहना है, सो इफ यू ट्राई एंड रिमूव इलेक्ट्रॉन, लाइक बॉस नहीं, आई एम नॉट गोना गिव इलेक्ट्रॉन्स, लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके कूल. So let's write down their electronic configurations. That will help us out. That will help us out. Penetration effect. अरे बड़े बड़े शब्द. ठीक है. I have written down the electronic configuration of this. Okay. Notice something here. What are our exceptions? Beryllium, boron, and oxygen, nitrogen, and fluorine. हाँ, oxygen, nitrogen, and fluorine. अच्छा ये दोनों है penetration effect. I don't know what that means. उसको थोड़ा elaborate कर सकते हो. What does penetration effect mean? I don't know. What does that mean? What I see here is a fully filled orbital and a half filled orbital and एक और fully filled. So these are exceptionally stable. So in तीनों में, if you try and bug these three guys, they don't like it. They don't want to accept electron. They don't want to give electron. They're happy. They're happy. So यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा मुश्किल. Why is this? There is a concept of exchange energy. अगर आप बैचलर्स करोगे केमिस्ट्री में, then you learn this. फर्स्ट ईयर में आपको ये सब पढ़ाया जाएगा. फर्स्ट ईयर में बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, मे बी हायर ईयर में you will learn what this is actually about. It's a quantum mechanical idea that says कि okay, अगर आधे हैं तो ये यहाँ जंप करेगा, ये यहाँ जंप करेगा, ये यहाँ जंप. So there are more ways for this to happen. Similarly, fully filled also, इसी को मैं एग्जांपल लेता हूँ. I'm not going to go to T10. इसकी the energy required, there are more ways of this electron going from here to here because they are all degenerate orbitals. Okay, तो इसीलिए half filled और fully filled बहुत stable होते हैं. अगर आपने पहले नहीं सुना है, don't worry about it. If you mugged it, ठीक है, half filled, fully filled ज़्यादा stable होते हैं. This is the same reason for both. Okay, configuration stable. Okay. Closeness of a subshell to the nucleus. अच्छा, ठीक है. Closeness of a subshell to the nucleus. What you're talking about, Rog, जो आप बोल रहे हैं, has to do with some other factors. It's true. The closeness bit is true for जब आप group देख रहे हो. Rog, the closeness bit is relevant if you're looking at a group, fluorine versus chlorine or oxygen versus sulfur. So anomalous behavior of this is because of closeness and also small size. Small size, closeness, same ही चीज है. But if you're comparing in period में they're all the same. They're all same. The closeness is the same, no, quote unquote. Do you understand? बहुत अच्छा point आपने बताया. देखो, shells are the same. Shell number 1, shell number 2. So all of these are in the second period and also in the second shell, right? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, whatever. Closeness same है. ठीक है? I hope you understood that. खैर, ये भी half filled, ये भी fully filled हो गया. This is the main reason as to why it is this thing. All right, cool. Let's go. Second nucleus has greater. Good morning, Golu Ram. That's a lovely name. Golu Ram ji, good morning. Is that Calc? Is that Calc from Discord? He's the guy who wishes me good morning. Oh, अगले वाले का सवाल आंसर दिया. Sorry about that. Yeah, see, देखो, this was what came in JEE main. ये सवाल आया था JEE main में, अभी की shifts में, one of the shifts. अभी हम लोग 10 किए थे, पता नहीं किस shift में था, किसी shift में आया था, ठीक है, but definitely आया था. The first ionization enthalpy values in kilojoule per mole of group 13 elements are this. JEE main में ये वैल्यू नहीं दी थी, सीधे ये दे दिया था, बोला कि भाई फिगर आउट करो. सो ये क्वेश्चन बोल सकते हो पी ब्लॉक का हो सकता है या फिर पीरियोडिक का हो सकता है, बट मैंने तो एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहा हूं, है ना. हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन फ्रॉम द जनरल ट्रेंड? व्हाट इज द जनरल ट्रेंड? अगर आप नीचे जाओ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इट शुड डिक्रीज, राइट, एज यू गो डाउन द ग्रुप. व्हाट इज दिस? यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. As you go down the group, you would expect, if it's like a decently, but there's a big jump यहाँ पे. There's a jump in her, or फिर it's increasing. It's not decreasing. It's weird, and again it's increasing. So it's like weird. So तीन जगह issue है. Where here and then here. यहाँ तीन जगह problem है. What are the problems? Can you think about it? Contraction, transition, contraction. Okay. So let's highlight these 3 points, okay, and we'll explore them. ये और ये, yeah, deviation क्या है? इन दोनों को एक्सप्लेन करना आसान है, yeah, क्यों? D block elements, D block electrons और F electrons, okay, because aluminium में there are no D electrons, and here there are suddenly D electrons, which have really bad shielding,
ओके, इट शुड डिक्रीज बट इलेक्ट्रॉन्स है, द शील्डिंग इज बैड, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सोचो, आई विल से वन मोर टाइम. Because d electrons are present in helium and they're diffuse, so they're not very well shielded. So nuclear charge का इफेक्ट उन पे ज्यादा होता है, तो उनको आसानी से अंदर पुल जाते हैं. So to take them out is a little bit hard. Similarly, same thing with this f electrons. Helium में this has f electrons. F is extremely diffuse, right? So there the nuclear charge is able to pull those in closer, इसलिए उनको जो है निकालने में, लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एफर्ट लगता है. तो सडनली जस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम हियर टू हियर. व्हाट अबाउट बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, क्या प्रॉब्लम है? बोरॉन बहुत बड़ा ड्रॉप है, ह्यूज ड्रॉप. हियर इज द साइज वाला कॉन्सेप्ट. रोग, यू आर टॉकिंग अबाउट द साइज आइडिया. साइज यहां पे आता है. बोरॉन का साइज इज मच स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, वेरी वेरी स्मॉल. ओके, एंड दैट्स व्हाई there's a huge drop between aluminum and boron. In fact, aluminum is a metal and boron is definitely not a metal. It's not a metal. No way. Like कहीं पे भी वो metal कोई property नहीं दिखाता है. ठीक है? Sure. You're gonna say कि boron, hydride, carbide, जैसे कि कार्बन का जो है डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, boron also has formed some pretty hard stuff. Sure, I get it. But nowhere close to aluminum. Okay, cool. Yes. Thank you, Tirthraj. Poor shielding, poor shielding. Lovely. Everybody got right. Bansari, how you doing? Poor shielding? Absolutely. Rog, Tirthraj, Bhagya, Tanu. Good job. Theoretical things are very interesting. थोड़ा बहुत irritating होता है, याद रखना. But once you solve enough questions, you will remember it for sure. Which of the following pairs of elements would have a more negative electron gain enthalpy? This was also tested in JEE में इस साल ही. Directly ऐसा नहीं पूछा गया था, but इसी concept पे सवाल आया था. Oxygen or fluorine, fluorine or chlorine. And these both things. Yes, Adi. Can you tell me, out of these, which has a more negative electron gain enthalpy? सोच के बताइए, please. Let me know. What do you think about this one? It's interesting. Doable, straightforward है, but it's interesting. All right. What do you think about this one? 1F, 2 chlorine. Okay. Doctor to be, Yatharth. That's great to have you here. 1F, 2 chlorine. पीयूष बोल रहे हैं पहले में F, दूसरे में chlorine. What do the rest of you think? बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? F has highest. Rogue. F does not have highest. Chlorine has highest. आशीष राज बोल रहे हैं fluorine. FCl says Radhika. Okay. Great. Between oxygen and F, this is like 141. And the reason I remember it is not because I've mugged it, because I've just solved these questions. मैं वही तो कर रहा हूँ. It's my job, right? I've been solving these questions, so I remember it. And why do I remember this 141? Because in that group, oxygen वाले group में polonium आता है और oxygen की polonium से भी ज्यादा कम है. So this is 180 or something. So it's weird. Yeah. S blah 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 polonium and then आता है oxygen because of this weird size. So that's why I remember this. I was like blown away. ये JEE main में इस पे सवाल आया था. खैर, F is greater. Chlorine is greater. Again, why between this and this is greater? Because small size and all of that, right? But इसका effect इतना pronounced नहीं है because electronegativity ज़्यादा है. Oxygen में this effect is very very pronounced. As I told you, polonium से भी ज़्यादा कम है oxygen की electron gain enthalpy. This कहाँ पे? This is there in P block elements. We'll deal with it when we do that. P block जब हम लोग करेंगे, P block grade 12 में, this is there. Yeah. All right. Yeah. 1F2Cl. Yes, exactly, Piyush. Exactly. Piyush ने अभी भी JEE दिया है, तो उसको याद है. Good job. Absolutely. Yeah. Too small, highly electronegative. Oxygen का Z effective higher है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नोबल आ जाएगा. O minus को एक और चाहिए, ठीक है? इसलिए सिर्फ -141 is the weirdly small number there. Okay. What would you expect the second electron gain enthalpy of O as positive, more negative, or less negative than the first? तो हम लोग ऑक्सीजन की डिटेल में जा रहे हैं. Okay, oxygen and fluorine. Yes, Tirtha, absolutely. Pampa, yes, brilliant. Okay, Piyush, Bhagya, बिल्कुल सही बोला सब लोगों ने. सही है यार, तुम लोग बहुत brilliant हो. Would you expect the second electron gain enthalpy of oxygen to be positive, negative, or more negative or less negative? तो ये दोनों या तो positive या फिर more negative या less negative as compared to the first. मतलब क्या हो रहा है? I have O minus and I'm giving it one more electron and it becomes O2 minus. इसकी हम लोग बात कर रहे हैं.
in this process, is delta H negative, delta H positive, or if it's negative, then ये delta H2 बोलते हैं. Is it greater than delta H1 or less than delta H1? What is delta H1? Delta H1 is this. O plus electron gives me O minus. This is delta H1. I know this is supposed to be gaseous ion. जानते हैं, समझते हैं, भावनाओं को समझो आप भी, है ना? Positive, positive. Rog and Piyush are all very sure about this. सही है, सही है. Less negative says Swatit. Okay. Swatit and Piyush, can you in the comments let me know your ideas behind this? And even Rog can tell Swatit कि Rog and Piyush are sure कि is positive, but Swatit को लगता है it's less negative. Okay. Can you guys talk to each other and sort this out? Or at least tell me what is your idea behind this? Tanu saying positive. JEE में आपकी क्लास करके 95 सर Chem में. Lovely Piyush. Good to hear this. Thank you so much. It's all because of you actually. आप लोग टीचर्स को बहुत क्रेडिट देते हैं, बट आप ही का जो परिश्रम है, that is what shines. So it's you. It's all you. We're just here to support you. Try your best. Awesome to hear. Yes, Bhagya says positive. Radhika says positive. More positive. Purna says more negative. Can you guys tell me the logic? Answer तो बहुत अच्छा है. It's very good to know the answer. But can you guys also tell me the logic? That would be very nice to know. If you give me the logic, it will be easier for us to convince each other about this. Yeah, because it is possible कि हमने कहीं पे कुछ पढ़ा हो, but पक्का याद नहीं है. होता है ऐसा, पक्का याद नहीं रहता है. So let's not depend on memory. Let's give us the logic. Let's give everybody else the logic as what's happening here. So sure, in theory, okay. Thanks Aditya for detail लिख रहा है. As addition of electron, nuclear charge decreases. न्यूक्लियर चार्ज वही रहता है. इलेक्ट्रॉन, अच्छा ठीक है ठीक है. सुपर डुपर से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव. ओके, कूल कूल कूल. रोग सेज एनायंस को एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए. दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, नॉट द बैक थ्योरी. ओके, सतीत हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन हैज लो एनर्जी. अच्छा ठीक है. सो आई गॉट 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. आई जस्ट क्लोज टू द आइडिया. जनरल थ्योरी यही है कि सेकंड इज ऑलवेज हार्डर टू ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. ऑलवेज हार्डर टू ऐड, ऑलवेज हार्डर टू ऐड. ओके, व्हाई? बिकॉज देखो यार, इसमें 8 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओरिजिनली है 8 इलेक्ट्रॉन. मैंने एक ऑलरेडी दे दिया, किसी तरह मैंने दे दिया है. अब मैं एक और डालना चाहता हूँ. मैं वांट टू मेक इट 10 इलेक्ट्रॉन. ऑल्दो दिस इज नोबल गैस, बहुत अच्छी बात है, नोबल गैस है, बट भाई ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उस पर जगह नहीं है. इट ओनली हैज 8 प्रोटॉन्स. सो लेट्स टॉक अबाउट इट लाइक दिस. द न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, ओके, बट द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस. ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव होता है, बिकॉज repulsion by the existing electrons. That is the issue here. Okay, and I already got it to 9. This is already 9 electron. This is the 10th electron. So this is very hard. That's the main idea here. Yeah, but Piyush, that's a good thing. NH2 NP6 is a good thing. That according to that बहुत बहुत अच्छी बात है. नोबल गैस है भाई, ले लो ले लो ले लो, आराम से ले लो. Right? So overall, super duper Piyush, overall हो सकता है negative. But the second one is always positive. You follow what I'm saying? This delta H1 plus delta H2 maybe is negative, but delta H1 is negative, delta H2 is positive. Okay? High electron density in subshell. Yeah, we could say that. Sure, we could say that. Yeah, not in subshell. Yeah, sure. Size of oxygen atom increases, nuclear force of attraction decreases. Thank you, Bhagya. That's a lovely way of putting it as well. More repulsion, more repulsion. Absolutely, you're all brilliant. Sahi hai. Let's go to the next question, which is 3.22. What is the basic difference between the terms electron gain enthalpy and electron negativity? सोच के थोड़ा बताओ. हम लोग बहुत बेसिक थियरी कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इन्हीं चीजों पे आप लोग गड़बड़ी करते हो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. You are adding an electron to the gaseous atom. Okay. Electronegativity, electronegativity. जब bonded pair है electrons का covalent bond में, तो the tendency to attract the electrons towards yourself, that is electronegativity, and that always depends on what the bond is. क्या हो रहा है, but this is absolute. ये एक absolute idea है, this is a relative idea. ठीक है. There are some more points you can get from NCERT, but this is a broad idea. ठीक है. मेन चीज ये है कि इट्स अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड यहाँ पे बॉन्ड कुछ नहीं है भाई, अकेला एटम बैठा है, उससे तुम इलेक्ट्रॉन जो है दे रहे हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन.
जेई मेन में पर क्वेश्चन करेक्ट, यस तीसरा यू आर राइट। नीट में भी तो ऐसे ही होता है ना, +4। जेई एडवांस में होता है, एडवांस इज +3 - 1 और +3 0 और +4 - 2। आई थिंक ऐसा है, अभी विल हैव टू चेक। एमएसक्यू ये है, दिस इज न्यूमेरिकल एंट्री एंड दिस इज यूजुअल एमसीक्यू। एमएसक्यू मतलब मोर देन वन करेक्ट, दैट इज हाउ एडवांस वर्क्स, ठीक है। खैर anyway, Swatit saying delta EGH is measurement while EN is tendency. बिल्कुल सही। रोग energy released or gained while electronegativity comes in bonded pair. बिल्कुल सही बोला। टेंडेंसी है, सही है, सही है। ग्रेट ग्रेट, लवली लवली। आदित्य क्या हुआ, रिट्रैक्ट कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन, would you expect the first ionization enthalpies for two isotopes? अरे वंडरफुल क्वेश्चन। दो आइसोटोप्स के लिए क्या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी या अलग होगी? थोड़ा सोच के बताओ इसको। आई विल वेट, यू डोंट हैव टू राइट अ लॉट, बट थोड़ा सोच के इसको बताओ। व्हाट डू यू थिंक? तीसरा इज द अदर वे अराउंड, इफ यू नो फॉर श्योर +4, बट इफ यू मेस अप -2, हेवी पेनल्टी। हेवी पेनल्टी और हेवी रिवॉर्ड भी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, दैट्स व्हाट एमएसक्यू इज। और न्यूमेरिकल इज द बेस्ट बिकॉज इज +3 एंड 0 है, मतलब बट मुश्किल भी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इफ यू नो यू डू इट, इफ यू डोंट नो आप बहुत टाइम लगा दोगे एंड यू आर लाइक अरे यार कुछ हुआ ही नहीं। इट्स एन इंटरेस्टिंग पेपर, इट्स एन इंटरेस्टिंग पेपर। व्हाट डू यू थिंक गाइस? कैन यू टेल मी द आइडिया बिहाइंड दिस? सेम या डिफरेंट? चलो रीजनिंग बाद में बताना, गट फीलिंग बता दो। गट फीलिंग के हिसाब से सेम, एस फॉर सेम, डी फॉर डिफरेंट, ये तो बता दो चैट में। रीजनिंग हम लोग खुद फिगर आउट कर लेंगे, विल डू इट टुगेदर, बट एटलीस्ट अपना एक इंट्यूशन बताओ, सेम और डिफरेंट, देन विल डू और डाइसेक्ट करेंगे। डिफरेंट से देवांशी, ओके। बाकी लोग क्या सोचते हैं? थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? अरे क्या हुआ देवांशी, रिट्रैक्ट क्यों कर लिया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? पीयूष सेज डिफरेंट, ओके ओके। ओके, सेम सेज अनन्या, वेलकम अनन्या। Swatit, same as I, only depends on effective nuclear charge and not neutron. अरे Swatit, बढ़िया भाई साहब। तीर्थराज says different, super duper is different, same. Devanshi says different, Radhika different, Bhagya different. Majority of the people on the chat are saying that different. Okay, now let us go to the justification part. I like one person has given me justification. Swatit has given me the justification also. आप लोग में से कोई और justification देना चाहेगा? रोग डिफरेंट सिंस देयर इज मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। रोग मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कैसे होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होता है। आइसोटोप में क्या है? आइसोटोप में प्रोटॉन्स तो सेम है, न्यूट्रॉन्स बदल रहे हैं, उससे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन्स, जेड इफेक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट? और इन दोनों में सेम हो गए। टेक C12 और C14, इसमें कितने हैं? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। इसमें कितने हैं? 6 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। नाउ इन बोथ ऑफ दिस प्रोटॉन तो सेम ही है, so it doesn't matter, it should be same, है ना? It's okay, होता है, कभी कभी होता है। Guys, that desktop turns on every time, it's so weird bro। सो जा भाई, सो जा। Protons, electrons, outermost shell of isotopes is the same. Exactly. The simplest ways to think about it is what Aditya said. भाई देखिए प्रोटॉन सेम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्यों अलग हुआ, है ना? That's it. That's the easiest way to think. Yeah. Everybody who said different, cute bundle. Okay. Hello to you too. I get distracted easily. Everybody who said different, do you agree with this? अगर आप कुछ और सोच रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग सो दैट वी विल सॉल्व दिस वंस एंड फॉर ऑल। यूज दिस टाइम जुडिशियसली, इतना प्यार से आराम से कोई इंटरनेट पे पढ़ाता नहीं है, ठीक है? सो सिंस यू गाइस आर वाचिंग दिस लाइव, मेक यूज ऑफ दिस एंड टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग। और अगर समझ पहले यू आर थिंकिंग यू हैव अंडरस्टूड, ग्रेट। इफ यू स्टिल थिंक इट इज डिफरेंट, बताइए थोड़ा, तो विल गेट इट आउट ऑफ देयर।
Yeah, let me know. And by the way, if you guys are looking for some test series of NEET, you can get it. I've already shared this with you last time around, but here it is again. You got a new page for this, you can get it from there. I'm guessing there are no doubts because no one's really active on the chat. सबको समझ में आ गया. You want to call out names? Bhagya, Pampa, Radhika, Devanshi, all good? सब ठीक है ना? Would you expect the first ionization enthalpies of two isotopes of the same element? ये तो हमने अभी किया. Sorry, I was just like brain dead mode, just reading the same thing. Sorry. Use the periodic table to answer these questions. Identify an element with 5 electrons in the outer subshell. नहीं, ये वाला ठीक है, कर लेते हैं. बहुत अजीब है, बट कर लेते हैं. Identify element that would tend to lose 2 electrons. Identify element that would tend to gain 2 electrons. Identify the group having metal. Yeah, this one's interesting. Metal, non-metal, liquid, as well as a gas at room temperature. Liquid, solid, gas, metal, non-metal, sub. ठीक है. I'm good. Crypto, how you doing? Yes, all right, good. NPAS SBBI. Look at that, bro. Piyush has given me a lot for. अच्छा, पहले का सबका दे दिया है. Basically, Piyush is saying ये कौन सा हुआ? नाइट्रोजन मतलब 7 मतलब 10 - 3 नहीं, तो ये 15 ग्रुप का हो गया, राइट? ग्रुप 15. ओके, ब्यूटीफुल. होल्ड ऑन. ग्रुप 15. I have a question here. Is it group 15 or is it halogen? Yeah. Oh. रोग बोल रहे हैं. A lot of people are saying this. Cute बंदर saying 4. What is 4, bro? I didn't understand. So कुछ लोग बोल रहे हैं नाइट्रोजन, कुछ लोग बोल रहे हैं हैलोजन. Sure, I have an idea about what your name means, my friend. Halogens. Okay. All right. I like it. Okay. All right. मैंने group 17 लिखा है. I have written group 17 because I feel outer subshell. Subshell लिखा है. Shell नहीं लिखा है. Subshell. ये है shell. ये है subshell. ठीक है. Outer subshell होगी ये. वाह बेटा वाह, क्या बनाया है. This is what we're talking about. I feel this. I'm not sure. अच्छा बंदर साहब, ठीक है. नहीं, हम लोग सब्जेक्टिव सवाल कर रहे हैं बंदर साहब या साहिबा. Not misgendering you in any way. Don't want to be cancelled. We are doing subjective questions. Yeah, the focus of this is to NCERT subjective questions because आप लोग NCERT खोलते नहीं है, तो मैंने खोला और आपके लिए हम लोग कर रहे हैं साथ में. ठीक है. N has 5 in shell. Yes, रोग, exactly. हम लोग सब शेल की बात कर रहे थे. Exactly. तो पहला वाला हो गया हैलोजन. Tend to lose 2 electrons. ये वाला आसान है. C is oxygen. ठीक है. हाँ, this is group 16. I agree. Group 16. Tend to gain is group 16. ठीक है. Lose would be group 2. Yeah. These are alkali earth metals. This is group 16. हो गया. Last वाला क्या? What about the last one? You figured out. ये हो गया. A, B and C हो गया. Group 2A. Piyush. Lovely. Okay. A is F. Yeah, paying respects. Rogue is paying respects. Okay, cool. All right. What about option D? ये कौन सा होगा? You are Sahib? Yes. Okay, Sahib. Sir, you're not from India. Okay. Cryptography. That's great to know. Are you just spamming me, bro? Come on, man. We're doing chemistry here. Let's focus on chemistry. If you want to chat, ping me on here. Ali, is that you? Ali? Are you spamming? Anyway, Telegram or Discord, right? Ping me here if you want to chat about anything other than what we're talking about right now. Let's focus on chemistry, specifically periodic properties. Group boron. Group boron मतलब 13 है ना? 13 में liquid कहाँ होता है यार? Group 14 silicon liquid कहाँ होता है? Liquid हो सकता है, liquid और gas I don't see here. चलो periodic table खोला जाए इसके लिए. Let us bring out our ब्रह्मास्त्र. हम लोग खोलेंगे periodic table को to figure this out. ptable.org, and F11 makes it full screen, and we remove the ads and little bit here we are. Okay. Oh, दिख नहीं रहा है. Here we are. Okay, cool. चलो भाई साहब देखते हैं solid liquid gas कहाँ है.
इसमें कहीं है क्या सॉलिड लिक्विड गैस? A lot of stuff. Oh, here you go. Shoot. Okay, this is a nice table. Let's zoom out a little bit. Okay, cool. So color, ये जो H अगर लिखा है, देखो ये है सब तुम्हारी gases. So if I look at the periodic table, gas हो गई highlight. Beautiful periodic table, right? Zoom. Okay. So if I do just gas is the eliminator. Looks like gases are there only in, we got to look at 15, 16, 17. देखो group 13 और 14 में gas है ही नहीं. Group 13 or 14. Oh, Annie. Is that a bot? Cryptography? Is that a bot chatting with me? Dude, we have a bot with us. I am honored to have a bot chat with me. Good to know. Hare Krishna Nidhi, how you doing? Group 17, okay, says gallium liquid होता है room temperature पे. Gallium liquid होता है. Gallium liquid थोड़ी ना होता है. Gallium का boiling, okay, ठीक है. Yeah, gallium is definitely a solid, bro. ठीक है. Let's open gallium since थोड़ा सा ये confusion हो रहा है. Okay, let's see. Gallium. Melting point is 302 Kelvin. ठीक है. रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है. थोड़ा हम लोग बाल की खाल उधेड़ रहे हैं, बट वी डू 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो नहीं होता है. ठीक है, छोड़ दो. एनीवे, अगर गैलियम है भी लिक्विड तो गैस नहीं है ना उसमें. देयर आर नो गैसेस. लेट्स फोकस ऑन गैस. सी, गैस इज देयर इन ग्रुप 15, 16, 17. ओके, व्हाट अबाउट लिक्विड? देखो लिक्विड, ब्रोमीन. विनर. लिक्विड बस दो है, एक ब्रोमीन और दूसरा mercury. That's the winner. Group 17 is the winner. You see that? Yeah. So that's the way you got to study the periodic table, by opening the periodic table. Yeah. इसको guess वैस नहीं करना है. Read करना है, like aha. It's an aha moment. You just read it and you, because of these colors you remember it. Solid तो सब जगह है. Solid देखो सब जगह भरे हुए हैं. ठीक है. What is awesome is liquid and gas. Cool. All right. Let's go back to that. I like this. I really like this. All right. Cool. Let's go back to this. Yes, कम होता है. You're right, Aditya. कम होता है. But gallium is a solid, or it's a liquid at 302 Kelvin approximately. Yeah, 302, 303 Kelvin, according to that chap there, Wikipedia, right? But हमको तो गैस भी निकालनी है. So hence the answer is group 17. Okay. Why? Gases तो सारी, all those, all of them are gases. Bromine is a liquid, iodine is a solid. ठीक है. और नीचे वाले भी solid है. Let's go. Next question. Assign the position of the element having outer electronic configuration. Oh, सही है. Wow. Okay. इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि अगर ऑक्सीजन है या फिर एलिमेंट कौन सा हो सकता है, या फिर रुबीडियम है. You have to do that. Yeah. Looking. NS2 NP4 for n equal to 3. N-1 D2 NS2 for n equal to 4. N-2 F7. N-1 D1 NS2 for n equal to 6. Last one I'll help you with. First and two you guys do. Rec. That's a beautiful thing that you're just saying. Rec. JEK those are here. Okay, all right. While you guys do this, I'm also going to quickly look at group 17. And is there an idea of metallic properties यहाँ पे? Ionization enthalpy first. Okay, cool. Astatine. Okay. I'm just opening up Wikipedia to prove to you so I don't waste your time directly. Control F, metal. Okay, cool. Here you go. Rec. अरे कहाँ गया यार? हाँ, here you go. हम लोग एस्टेटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है? It is a metalloid, but it has some metallic properties. Okay, it's similar to silver basically. Yeah. And how do I know that without reading Wikipedia? Look at the ionization enthalpy. The ionization enthalpy is around 900, which is similar to that of magnesium and boron. It's between beryllium and magnesium के बीच में. Beryllium is definitely not a metal, right? So it makes it a little complicated. But this chap right here, astatine, can be considered to be, it has metallic properties. Okay? So that's why you go right. It's not metal. Yeah, exactly. It's not metal, but it has metallic properties. Yeah. All right. Cool. Let's go back to that. Let's go back to this one. Cool, man. Good to see you here, Rick.
B is vanadium. Okay, let me see this now. Sulfur. तीसरा सल्फर 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 रोग सुपर डुपर. ओके सल्फर तो हो गया सॉर्ट. सल्फर हो गया सॉर्ट. लिख देते सल्फर. 3s2 3p4 16 विच इज सल्फर. ओके बी क्या होगा? टाइटेनियम. तो 3d2 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम. हाँ मुझे भी टाइटेनियम ही लग रहा है. गुड जॉब. टाइटेनियम होगा 2. रेक ये एनसीईआरटी ही है. रेक दिस इज एनसीईआरटी सब्जेक्टिव. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ये तो एग्जाम्पलर भी नहीं है. दिस इज जस्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी ब्रो. ठीक है इसलिए हेल्प करते हैं. देखो जेई में आ सकते हैं ऐसे सवाल. रैंडमली आ जाएंगे क्या मालूम. 2 is TI. What about the third one? The third one's interesting. Let's write it down. So I have 6s2 5d1 and 4f7. Now I may not be sure about what is the element, but we can get to uska number kya hai. How many electrons does it have? How many protons, right? So it is plus 10. It's a noble gas. Plus 10. Noble gas का कहाँ होता है? You have 2, you have 10, 18, 36, 54. 6 ना? 1, 2, 3, 4, 5. अरे 1, 2, 3, 4, 5. हाँ 6 will be some 80 something, right? So it is 5 plus 10. So this means कि इसका atomic number is 64. Now let's go back to this beautiful table. Here's the table which I have misplaced. Hold on. Okay, here's the table. Where is 64? 64 is gadolinium. It is exactly behind me. Brilliant. मेरे सर के exactly पीछे. Like my head covers it wonderfully. So I'm going to move my head a little bit without doing any antics. Okay. There you go. Gadolinium. GD. Gadolinium. Sounds like, you know, उसका Wonder Woman का name, I think. What is her name? Anyway, whatever. Diana. That was Diana. Somebody, one of the characters from there. Anyway, gadolinium GD should be the answer to this one. All right, I'm going to go back to my corner and sulk there. I'm kidding. And we're back here. GD, gadolinium. You guys know this. अरे वाह तुम लोग को तो मालूम था. मुझे तो ढूंढना पड़ा. तुम लोग बहुत सही हो. You already knew this. That's lovely. ठीक है. Sweet. Well done, well done, well done. Okay. Yes, you're all absolutely correct. Gadolinium is the right one. 3GDF orbital. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. All right. Next question. This one's interesting. This one's fun. Whoa! This is one of the nicest questions in आज के लिए I think this is one of the nicest questions. Okay. You've been given delta H1, delta H2 and electron gain enthalpy. So you have delta H1, delta H2 and electron gain enthalpy. तीनों चीजें दी गई आपको. ये क्या हो रहा है भाई? Okay. Looks like that's just stuck there. Anyway. Which element is likely to be least reactive metal, most reactive non-metal, least reactive non-metal, metal which can form a stable binary halide metal, metal which can form a predominantly stable covalent halide. बताओ A to F. How about we do A B C D पहले? Next batch में we'll do these. A B C D पहले करते हैं. Let's do this. A B C D पहले करते हैं. Magnesium. अरे कैसे मालूम मैग्नीशियम है दर्श? Let's go with 1, 2, 3 and 5. Roman number 1, 2, 3 or 4 or 5. A का 5. Okay. Least reactive element. अरे हाँ भाई इसकी कैसे किया? इसका जो first ionization enthalpy इतनी खराब है. For sure. Okay, great. A is 5. Lovely. What about B? Most reactive element क्या होगा? Darsh, brilliant. But how do you know it's magnesium, dude? 1 is D. अच्छा. Least reactive non-metal is D. अच्छा ठीक है. Let's see. We'll get to that. Oh, 1 is 5. नहीं? Oh, retract कर दिया सुपर ने. ठीक है. सुपर ने retract कर दिया. So A was 5. What about B? A is 5. Lovely. भाग्या पीयूष सुपर डुपर बिल्कुल सही. देवांशी बिल्कुल सही. तीर्थराज saying B is 2. Okay. B is 2. Why is B 2? Most reactive non-metal. यार अगर non-metal है तो ये वैल्यू शुड बी काइंड हाई राइट. नॉन मेटल मींस नहीं. बी इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल. क्या सॉरी गलत बोला मैं. मोस्ट रिएक्टिव मेटल. ओके तो ये वैल्यू सबसे छोटी हो इसकी. ओके मेटल है क्योंकि डेल्टा एच ये छोटा है. ठीक है. लुक्स गुड ब्रो. मोस्ट रिएक्टिव मेटल 2 सीम्स गुड टू मी.
2 seems good to me. Good job. Yeah. Pampa, Devanshi, Bhagya, Radhika, बिल्कुल सही. तीर्थराज, क्रिप्टो भाई साहब and रोग. क्रिप्टोग्राफी कौन? अभी तो आंसर देने लगे. Look at this. You're not a bot. You're a real person. Cryptography. Where are you from? Cryptography. Rogue says C is 3. चलो अगले वाले में देखते हैं. What happens to C? All right. C क्या है? The most reactive non-metal. Most reactive non-metal मतलब it really likes accepting electrons. If it really likes accepting electrons, ये होगा. And I think this is fluorine because the number of times I've seen this number, I'm scared. I think this is fluorine. Also a fact that it's a non-metal मतलब delta H1 should be fairly high. This should be high. This also should be high. दोनों चीज काफी high होनी चाहिए. And the only thing where both are high is this. I mean, this could also take the cake, but between these two, I think this is better. Yeah, between 3 and 4. So yeah, C should be 3 as well. Excellent work. Excellent work, people. Bandar Saab is saying C3. Rogue, Pampa, everyone saying C3. Okay, all right. Crypto's gone to the next one. Crypto says D is also 3. Okay. Yeah, if the most reactive one is 3, how can the least reactive one also be 3? I don't think this can be 3. थोड़ा और सोचो Crypto, just think a little bit more. D1, Bandar says D is 1. Okay, least reactive, non-metal. अगर non-metal है, then this value should be high IE1. I think, I don't know. You guys can tell me your opinions. अगर non-metal है तो high IE1 होगा, I think. And least reactive मतलब ये वाली value होगी small. This value small and this value high. Which of these has this value small? Small मतलब कि let's eliminate these two. ये दोनों तो नहीं होंगे. It could be any of these other ones. It could be any of the other ones. And high value of this. Okay. High value. Oh, looks like it should be 4, bro. 4 हुआ क्या? मुझे 4 लग रहा है. Oh, forget 4. Look at 3. I'm sorry. Look at 5. I think 5 is it. 5 must be 5. है ना? Good to know, Crypto. Which one of my colleagues are you? I have so many colleagues at BYJU'S. Which one of my colleagues are you? Devanshi says D5. D5 noble gas. Rec. Well done, Rec. D1 super duper. D1 तो नहीं हो सकता यार. D1 मतलब metal हो जाएगा, है ना? Metal हो जाएगा D1. 1 and 2 are metals. 1000% sure. 1000 में कितना है इसमें? 1,00,000% sure. तीर्थराज. Bhagya, Piyush, absolutely. Rogue, 1 has a very high jump in second IE. Therefore, 1 electron in valence shell and ground state show a metal. Arey, wow, Rogue. Very, very, very nice. Vaishnavi, love the logic. D should be 5. बिल्कुल सही. अभी देखते हैं. Let's look at E, F and all of that. What is E? Now, थोड़ा सोचो. What happens with E? आगे बढ़ते हैं. Stable, binary, halide, MX2. This is where Rogue's idea will also help. MX2, यानी कि 1 plus 2 should be low. Decently low. Right? 1 plus 2 should be decently low. Now, 1 plus 2 decently low कहाँ पे है? It looks like it's either 4 or 6. बाकी दोनों में 1 plus 2 is very high. Like ditch. Right? Even if you look at 1 and 2, this could be maybe sodium and potassium or something. But it is not alkali earth metal. ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. But in this, there's a very negative 295. So not this. Hence it must be 6. It must be 6. Yes, Bandar says E6. Exactly. Yes, Rek. Bilkul sahi. Teethraj, how to identify? Partha, did you follow what I just said? Yeah? Crypto, which college? I've gone to 3 colleges, Crypto. कौन सा college? बताओ जरा. You've made this hard for yourself, Crypto. All right, which college? नाम बताइए किस college का? And which year? That's like an MCQ. Yeah. College number 1, college number 2, college number 3, and years. Like match the column. You're going to have a fun time, Crypto. Okay, E6. All right. Partha, you want me to repeat what I said? Partha, how do I know that E is 6? Stable, binary, halide, metal. Metal matlab ki I need to lose electron. And not just one, I need to lose 2 electrons. Hence, delta H1 plus delta H2 should be small. Okay, it will be positive but small.
डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, इसकी वैल्यू देखो, इट इज क्लोज टू 2000. Look at all the others, बहुत ज्यादा यार. See, this is some 4000. The rest are like so stupid that I don't even want to talk about them. This is good, right? 4 is good. 4 is also 2800, but look at this value. It is very high. ये भी है minus 295. So this is a non-metal. इसलिए we ignore this and hence it should be E. It should be 6. ठीक है. F का क्या होगा? F का बताओ. And finally, to Parth, I hope you understood. Crypto, which college and which year? Tell me. Radhika Mittal says E6. Okay, we are done with that. Tirthraj, Vaishnavi, absolutely. And finally, F is 2. Okay, F is 2. Okay. Oh, but Rek बोल रहे हैं F2. और कौन बोल रहे हैं? रोग बोल रहे हैं F1. F1. 84 days since F1 happened, right? 84 days. Rogue is saying F1. Tirthraj, super duper. Piyush, 500%. Tirthraj, I like his percentages. Bhagya, Bandar, Devanshi are all saying F1. Okay, good path. Parth Sarthi Pradhan. Wow. Bhagwan Krishna ka naam. Parth Sarthi Pradhan. Lovely. Pampa. Okay. The metal which can form a predominantly stable covalent halide. Now, covalent halide matlab ki metal matlab pehli I1 should be low. And covalent matlab ki delta Eg should also be low. दोनों low होगा, covalent compound बनाएगा. It likes giving away electrons, but it doesn't like accepting electrons either. It's like, bro, I'm like, दोनों चलेगा. I can do both. So midway through, sure. All right, F1. Yeah, good job. Oh, really, Crypto? I didn't know. Would have never guessed. All right, that was good fun. All right. I have a couple of more questions for you, but since we are running out of time, let's see how many we can solve. I have 3 more questions. I think I have 3 more questions. कितना कर सकते हैं? Try करेंगे. Which of the following model period correct? ठीक है, कोशिश करते हैं. Let's try. जितना कर सकते हैं we will do. I have 4 more questions. जितना कर सकते हैं we will do. Okay, cool. Let us do. Which of the following statements related to the modern periodic table is incorrect? 3.34. The last question was good. It was easy, but थोड़ा effort लगाना पड़ा. It was easy. Yeah, all right, good, Rick. It was easy, but it was also amazing, right? Because पूरा concept, electron gain enthalpy, ionization enthalpy, सब कुछ पूरा cover हो गया. Lovely question. That's okay, super. It was a tricky question, not that direct. थोड़ा सोचना पड़ेगा. इसको try करो. Modern periodic table कौन सा incorrect है? B? Okay, Pritha says B very quickly. P block has 6 columns, maximum 6 electrons can occupy. ये तो सही लग रहा है. D block has 8 columns. नहीं यार, D block has 10 columns. खत्म. B is the incorrect. छोड़ो. Each block contains columns equal to number of electrons. सही है. Block indicates value of metal quantum number. Yes. Block is L. S, P, D, F. Block, which is L value. सही है. Easy. Yes, this is MCQ, Bandar Saab. Yes. You guys have those. Very easy. Piyush, Devanshi. Yes, Radhika. Incorrect. Miss हो गया. अरे यार. अरे it's okay. देख यार, नीट में, जेई में, I know you're very. See, solving questions, पढ़ाई. There are 3 things to this whole JEE NEET वाला thing. Okay. One is learning. Second is solving questions. Third is giving the test. ये तीनों अलग-अलग चीजें हैं. People think there are just 2 things. एक तो पढ़ना, दूसरा टेस्ट देना. No, there are 3 things. You are learning stuff. You're solving questions will give you confidence. Then you have to take test. ये टेस्ट वाला environment ना, you have to create for yourself. तुमको जाके बैठना है टेस्ट सेंटर में. Which is why I keep saying, give test series, bro. And with that, quick reminder: shop.byju's.com. There's that plug. There's the marketing plug. That's what I'm doing. I'm doing marketing, right? But seriously, you guys need to take tests because test में ना, you know everything, but test में जाके poof, everything just evaporates. तो आदत डालनी पड़ेगी टेस्ट टेकिंग की, जरूरी है. ठीक है. Okay, let's go on to the next question. Incorrect है ये वाला ऑप्शन. कितनी बार आएगा यार? 2 बार आ गया क्या? अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है. सॉरी, ये वाला बी नहीं है. Which of the following statements is incorrect? फिर से incorrect. Ionization enthalpy increases for each successive electron. Greatest increase in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gas configuration
End of valence electrons is marked by a big jump in ionization enthalpy. End of valence electron मतलब कि valence electron खत्म हो गया तो same as noble gas. Removal of electron from orbitals bearing lower n value is easier for orbital having higher n value. Removal of electron say from 2s is easier than 4s. 2s easier than 4s. Whenever in doubt, now take example, like put some numbers to it. Parth Sarthi, how to manage revision after studying it for first time. Make flashcards, notes बनाइए, अपने खुद के notes, your own notes, okay, not some toppers notes, ये सब बकवास होता है. Make your own notes, ठीक है? Flashcard बनाओ, आजकल Anki है, lot of tech is there, use it for the greater good and you'll be good. इस वाले पे D, yeah, easy one. Rogue, Piyush, Bandar, Aditya, Devanshi, brilliant. Teethraj, 2s is exactly, it's easier. No, it's not. No, it's greater, isn't it? 2s से निकालना is much harder than 4s. In fact, as you go down the group, basically, think of this now. Na, K, cesium कितना ज़्यादा होता है? As you go down the group, ionization enthalpy decreases. So it's easier to remove in 4s as compared to 2s. ठीक है? This is incorrect one. ये लास्ट क्वेश्चन है क्या शायद? नहीं, इसके बाद एक और है बस. नहीं, इसके बाद दो और है. देखते हैं. Let's see if we can do. Considering the elements barium, aluminium, magnesium, and K, the correct order of their metallic character. Metallic. Oh, what is this, bro? ठीक है, try करो. Try this question out. Easy question. All right. Bandar, understanding thermodynamics. You can never be 100% sure. Material life में तुम 100% कर ही नहीं सकते हो. Thermodynamics बोलता है नहीं कर सकते हो. Spiritual life में 100% है. Material life में there is no 100%. Because of entropy. I don't know if you know this, right? There is infinite change in entropy. Infinite change. This slope is basically, it's asymptotic. If you think I'm completely bonkers, मैंने actually पढ़ा है. So I'm not just making this up just to mess with you. This is entropy. This is, versus any sort of reaction coordinate. So it is almost impossible to get something that's 100% either this way or that way. Either way. दोनों जगह asymptotic है. खैर, entropy says you can't ever be 100% in material. So left to right, metallic character decreases. Down the group it increases. अच्छा, ठीक है. So left to right मतलब potassium greater than magnesium greater than aluminium. Down the group increases boron and aluminum. How do you do this then? Eliminate करें. Eliminate करने से ये तीनों हो गए eliminate. Simple हो गया. Just with this order I have eliminated. Answer is this. कुछ सोचना ही नहीं. छोड़ो. Easy one. Dettol का ad देख के आए हैं. Piyush 99.9% कीटाणु मारने वाले. Okay. Aditya, it's interesting. But in summer it's about 40-45 max. Aye? Super duper. I think you are confusing evaporation and boiling. Evaporation and boiling are two different things. Evaporation happens at all temperatures. Okay, boiling happens at 100 degrees Celsius. Difference is this is a bulk phenomena and this is a surface phenomena. Okay. Talk more on IT Chem. Ping me. You're on Discord and Telegram. I'll give you stuff to read. Yeah. Boiling is when every molecule of water is at atmospheric pressure. सब बन गए वेपर. Evaporation में सिर्फ surface, because the surface energy is more or that surface से निकलता जाता है. गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी निकलता है. That's all. ठीक है. Next question. B, C, N, F, S, I. Same idea. Correct order of non-metallic character. अब इसमें सोचना पड़ेगा. Same चीज है. Increases left to right, decreases down the group. अब करो कोशिश. इसमें कैसे करोगे? Tell me. What do you think about this? This is interesting, right? Parth Sarthi, I teach on YouTube currently. Maybe अगर कल शुरू करें online batches, then I'll tell you. But as of today, I teach only on YouTube on the Aakash BYJU'S JEE and Aakash BYJU'S NEET channels. Vapors don't burn. मैं समझ नहीं पा रहा.
और फिर से बोलना, समझ नहीं पाया। हाँ, okay. C, you guess. C, 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 C. All right. YT. I'm just going to call it YT because I can't pronounce the first thing. I don't get these Japanese names, bro. When we boil water, vapors don't burn our skin fast. Vapors are 100 degrees. Bro, don't. Don't. These things are nice to write in a book. Don't ever go near boiling water. You will learn a life lesson very soon where you really should not. C. Okay, let's see. Let's see. देखते हैं क्या होता है. So if it increases from left to right, I've written this down. Decreases down the group. Okay. Now let's eliminate. जो इसमें नहीं fit होता है उसको eliminate कर देते हैं. तो ये दोनों हो गए eliminate. Now between C and D, you just have to know. There is no way of guessing. You have to know. You have to know what the answer is. और कोई option नहीं है इधर. ठीक है. It is C, B and SI, which is option C. Logic गई तेल लेने, अभी बस नंबर से देखना पड़ेगा. Right? You need to just know that this is the answer. क्या करें? Move on. Yeah, C is the answer here. Kartikeya bhai sahab, it is C. Yeah, Bandar sahab is also C. Everybody else who said C, good job. YT, Duper sahab, Parth, Radhika, yeah, Teethraj, absolutely, absolutely. Piyush, good job on the guess. All right. एक और सवाल इसी लाइन में, आई थिंक ये वाला लास्ट है, आज का आखिरी सवाल. थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड. अपॉलॉजीज, आई टुक मोर ऑफ योर टाइम दैट वाज इंटेंडेड. लास्ट सवाल है, we'll do it in a couple of minutes. Similar question. Mess around and find out. Yeah. F, Cl, O and N. The correct order of the chemical reactivity in terms of oxidizing property. अरे बाप रे, oxidizing property. अब क्या करें? Guys, oxidizing property क्या करें? All right, Karthik. All right, thanks. Oxidizing property. देखो, अगर आप 11th में हो, then you may not know this. But if you're in 12th, you will know for sure that fluorine सबसे ज्यादा होता है. Fluorine is at the top, bro. Fluorine has to be at the top. So you can eliminate if you go from left to right. Yeah, increase करता है, decrease down the group. General idea ये है. Yeah, these are your two things. And again from here you can eliminate two options. इन दोनों से ये दोनों हट गए. And between this and this, you just have to know. There is again, you know, when you boil it down, यो इतना मुझे बोलने की जरूरत नहीं. Piyush thinks it's A. Teethraj, Pampa, Devanshi, Bandar think it's B. Cryptography, standard reduction potential. All right, you're definitely a student. You're not a bot. Okay. JE aspirant spotted cryptography. Sudeep, you're in 11th? All right. Yeah, this question will be easier to answer in 12th. Otherwise, in 11th, it's a little bit hard, right? But yeah, the answer is this guy right here. Hold on. Option B is the right answer. You know this by looking at the standard reduction potentials. From data, okay. भारी हो गया आज का सेशन थोड़ा. Although periodic table is supposed to be chill, थोड़ा भारी हो गया because there's so much to mug. And I have done around 60% of the questions. Right? मैंने around नहीं, I think I've done exactly 50% of the questions. Around 20 सवाल मैंने किए आपके साथ. बाकी 20 भी आप कर लेना. Why am I doing these sessions? या आप खुद भी कर सकते हो. I'm doing this ताकि आप में उत्साह है कि ये आसान सवाल है, but also कुछ दो तीन चीजें जो tricky होती हैं. So please solve all these questions and you will ace NEET. There is no chance you will not build it. I understand on the day of the exam you may have nerves. एक दो क्वेश्चन सही गलत हो जाएंगे, but करो यार, कोशिश तो करो. वो सब के बारे में क्यों सोच रहे हो अभी? Try your best. ठीक है, चलो हम लोग मिलेंगे सैटरडे को. We will do chemical bonding on Saturday. है ना? बॉन्डिंग करने वाले ना. पीरियडिक के बाद क्या आता है? बॉन्डिंग आता है. बॉन्डिंग करते हैं सैटरडे को. चलो, see you all. Thank you for your time. As always, these notes will be available on Telegram. And if you guys want, Discord पे भी डाल सकता हूँ. बताइएगा, let me know. चलो, that's my time. See you all. Ankita, I think will do a class. नहीं, Ankita class भी हो गई. Well, you're done for the day. Have fun. Bye. Bye. Exactly. Thank you, Piyush. Exactly. That's the reason why this is here. B is the answer. 18 सवाल. Okay, teacher has been counting. That's great. That's great. See you. Thank you so much. Bye.